हेलो गाइस। सो आज मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया एक 8 GB रैम लैपटॉप के लिए। तो वो अभी रिसीव हुई है मुझे। तो आज हम देखते हैं, रैम अपडेट करके पहली बार करूँगा मैं लैपटॉप में। देखते हैं, अनबॉक्स करते हैं। सो ये वो रैम क्रूशल की है, 8 GB DDR4 3200 MHz में। ओके, ये ऐसी पैकेजिंग है। उन्होंने मार्कर से लिख रखा है MRP 2500। बॉक्स करते हैं इसे। तो ये रही और रैम क्रूशल 8 GB DDR4। सो ये मुझे अराउंड 1379 रुपीज़ की पड़ी है। पता नहीं इसमें इन्होंने 2500 क्यों लिखा हुआ है। अब इसे लैपटॉप में डाल के देखते हैं। सो दिस इज़ माय लैपटॉप। ये सर नाइट्रो 5। सबसे पहले इसे सेट डाउन करते हैं। ये भी अमेज़ोन से मंगाया था मैंने। तो ये शट डाउन हो गया। हार्ड डिस्क 1 TB। Okay. And here is the SSD, and there is another slot of the SSD, and this is battery. एक बार चेक कर लेता हूँ।
शो हो रहा है यहाँ पे 15.8 GB। थैंक यू।